Time to correct mistakes. Usama Khilji. Published December 31, 2022. Subscribe your own channel. Dawn vocabulary with Urdu meaning. In the soap opera that is Pakistani politics, the year 2022 should be the climax. Limits were pushed, the constitution was under threat, rights were violated to the core, propaganda was exposed, democracy threatened, and all the while the economy plummeted. There were several events in the year gone by that can be defined as cataclysmic in themselves. Put together, they projected a view of a country where the knives that were out for political and other rivals also harmed democracy and fundamental rights in the process. There are several lessons to be learnt, and stock-taking to be done so that 2022's mistakes are not repeated. With the PTI still in power at the federal level at the beginning of the year, the draconian PECA ordinance was introduced to make a bad law worse by expanding powers to prosecute those who criticize state policies by expanding criminal defamation offenses and reducing protections. To the benefit of Pakistani citizens, as well as those who brought the undemocratic ordinance, the Islamabad High Court struck down the PECA ordinance and also amended Section 20 of the Prevention of Electronic Crimes Act, 2016, to eliminate the criminal defamation part that criminalized harm to reputation online, a clause that was exploited to silence both dissent and harassment allegations by women. Constitutionally too, there was anxiety. We all witnessed the continuing saga of civil-military ties, with sides being switched, neutrality invoked and questioned, and the cracks becoming public as the much-celebrated same-page relations between the PTI and the military faltered. Imran Khan asked the neutral establishment to stop the vote of no confidence, which went through in April, against him, and tried to get the speaker to stop it as well. The Supreme Court had to intervene to address the constitutional crisis. The latter was also seen in Punjab, where democratic tradition was hit hard when, for a while, the Prime Minister's son took over as Chief Minister after controversial assembly proceedings. Despite claims of the establishment's neutrality, the PTI found itself being targeted in a similar fashion as the PMLN was while in opposition for criticizing the military's interference in politics. It is strange that this meddling has been opposed not on the basis of principles but, rather, for not getting establishment support. It is in this environment, with the PTI openly abusing the military, that the party leadership faced persecution, fake corruption cases, abuse of cybercrime laws, torture of party leaders including members of parliament, detention without charge, and continued attempts to bring in laws to strengthen the state's ability to silence dissent. In the light of the events of 2022, it is important for the rulers to commit to major improvements. But some things always remain the same. Elected MNA from South Waziristan Ali Wazir remained in jail despite several bail orders, due to additional cases being filed and judges refusing to hear his cases, while Baloch students and activists continued to be disappeared, showing that the state's tolerance of dissent in Balochistan and Western Khyber Pakhtunkhwa was particularly low as before. It is in this year that the Taliban's terror activities increased in KP and crept into Islamabad. The leaderships of the Pashtun Tahaffuz movement and the National Democratic Movement had warned of this, but to no avail. The billions spent on military operations seem to have gone to waste as police officers in the capital are again being killed, and girls' schools in Swat and the newly merged districts of KP are again under threat. In this context, one cannot ignore the influence of the Taliban in Afghanistan, who have shut down schools and universities for women and forbidden them from employment. Inflation has continued to rise, with the cost of living becoming unbearable for a large section of society, especially with increasing oil, electricity, and gas prices. This is a blow to the right to exist with dignity and the provision of life's necessities. There was no let-up in the persecution of the media, but 2022 saw pro-PTI media outlets and journalists take a hit, while those who had lost their jobs under the PTI started to resurface on TV. The assassination in Kenya of anchor Arshad Sharif, who had left the country in the wake of threats and multiple cases filed against him, was particularly gory.
Meanwhile, audio leaks of opposition figures started surfacing, embarrassing those behind the leaks more than the victims in this gross violation of privacy. In the light of the events of 2022, it is important that the top leadership in Pakistan commits itself to improvements in 2023, which is likely to be another very busy year of politics due to the expected elections in October. Children who were 13 years and older during the 2018 election will now be eligible to vote, with more than half of the country's population under 30 deciding who is to govern Pakistan for the next 5 years. It is of utmost importance that the Constitution of Pakistan be followed in its true spirit rather than being manipulated to suit the interests of the powerful. It is also essential that the interference of the military and intelligence agencies in politics stops, and that the oath of military officers as outlined in the Constitution not be violated. The fact that Gen Bajwa retired in 2022 after being at the helm for 6 years, instead of the routine 3 because of a debatable extension, speaks of the need for political parties to draw red lines of engagement with the establishment. The media's independence must be respected, and social media regulation that is under review currently must be rights-friendly rather than reflect the state's control-related paranoia. Enforced disappearances must stop for any semblance of stability, and torture should be effectively outlawed with consequences for officials indulging in either. Pakistanis have proven over history that they are capable of successfully resisting any attempt at violating their fundamental freedoms. The writer is director of BOLOB, an advocacy forum for digital rights. Published in Dawn, December 31, 2022. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. पाकिस्तानी सियासत के सूप ओपेरा में साल 2022 क्लाइमैक्स होना चाहिए। हुदूद को आगे बढ़ाया गया, आइन को खतरे में डाल दिया गया, बुनियादी तौर पर हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई, प्रोपेगंडे को बेनकाब किया गया, जमहूरियत को खतरा लाहिक हुआ और हर वक्त मईशत ज़वाल पजीर रही। गुजरे हुए साल में बहुत से वाक़यात पेश आए जिनकी वजाहत अपने आप में तबाही के तौर पर की जा सकती है। मजमूई तौर पर उन्होंने एक ऐसे मुल्क के बारे में एक नुक्ता नज़र पेश किया जहां सियासी और दीगर हरीफों के लिए छुरियों ने भी इस अमल में जमहूरियत और बुनियादी हुकूक को नुकसान पहुंचाया। सीखने के लिए बहुत से असबाक हैं और स्टॉक लेने की ज़रूरत है ताकि 2022 की गलतियों को दोहराया न जाए। इस साल के आगाज में वफाकी सतह पर PTI के इक़्तिदार में होने के बाद ज़ालिमाना पेका ऑर्डिनेंस मुतारिफ कराया गया था ताकि मुजरमाना हक इज़्ज़त के जराइम में तोसी और तहफ़्फ़ुज़ को कम करके रियासती पॉलिसियों पर तनक़ीद करने वालों के खिलाफ कानूनी चारा जोई के इख्तियारात में तोसी करके एक ख़राब कानून को बदतर बनाया जा सके। पाकिस्तानी शहरियों के साथ साथ गैर जमहूरी ऑर्डिनेंस लाने वालों के फ़ायदे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेका ऑर्डिनेंस को कालादम करार दे दिया और इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के सेक्शन 20 में भी तरमीम की ताकि मुजरमाना हक इज़्ज़त के इस हिस्से को ख़त्म किया जा सके जिसने ऑनलाइन साख को नुकसान पहुंचाने को जुर्म करार दिया था। एक ऐसी शिक जिसका इस्तेहसाल ख़वातीन के ज़रिया इख्तिलाफ राय और हरासा करने के इल्ज़ामात दोनों को खामोश करने के लिए किया गया था। आईनी तौर पर भी बेचैनी पाई जाती थी। हम सब ने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की मुसलसल दास्तान का मुशाहिदा किया जिसमें अतराफ तब्दील किए गए, गैर जानिबदारी का मुतालबा किया गया और इस पर सवाल उठाए गए और PTI और फौज के दरमियान एक ही सफ़े के ताल्लुकात में दरारें खुलकर सामने आए। इमरान खान ने गैर जानिबदार एस्टेब्लिशमेंट से कहा कि वो उनके खिलाफ अप्रैल में होने वाले अदम एतमाद के वोट को रोकें और स्पीकर से भी इसे रोकने की कोशिश की। आईनी बहरान से निमटने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़े। मुअख्खर ज़िक्र को पंजाब में भी देखा गया जहां जमहूरी रवायत को इस वक्त सख्त धचका लगा जब कुछ अरसे के लिए वज़ीर आज़म के बेटे ने असेंबली की मुतनाज़ा कार्रवाई के बाद वज़ीर आला का ओहदा संभाला। एस्टेब्लिशमेंट की गैर जानिबदारी के दावों के बावजूद PTI ने खुद को इसी अंदाज में निशाना बनाया जिस तरह मुस्लिम लीग नून सियासत में फौज की मुदाखलत पर तनक़ीद करने पर हिज़्ब इख्तिलाफ में थी। ये अजीब बात है कि इस मुदाखलत की मुखालफत उसूलों की बुनियाद पर नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत न मिलने की वजह से की गई है।
इस माहौल में जब पीटीआई खुलेआम फौज को गालियां दे रही है तो पार्टी क़यादत को जुल्म और सितम का सामना करना पड़ा। बदनवानी के जाली मुकदमात, साइबर क्राइम कवानीन का गलत इस्तेमाल, अरकान पार्लियामेंट समेत पार्टी रहनुमाओं पर तशद्दुद, बगैर किसी इल्जाम के हिरासत में रखना और इख्तिलाफ राय को खामोश करने की रियासत की सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए कवानीन लाने की मुसलसल कोशिशें। 2022 के वाक़यात की रोशनी में हुक्मरानों के लिए ज़रूरी है कि वो बड़ी इस्लाहात का अहद करें, लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा एक जैसी रहती हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान से मुंतखब MNA अली वज़ीर ज़मानत के मुतअद्दिद अहकामात के बावजूद जेल में रहे। इजाफी मुकदमात दायर होने और जजों की जानिब से उनके मुकदमात की समाअत से इनकार की वजह से, जबकि बलोच तलबा और कारकुनों को लापता किया जाता रहा, जिससे जाहिर होता है कि बलोचिस्तान और मगरबी खैबर पख्तूनख्वा में रियासत की इख्तिलाफ राय की रवादारी पहले की तरह खास तौर पर कम थी। इस साल के पी में तालिबान की दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इजाफा हुआ और वो इस्लामाबाद तक पहुंच गए। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत ने इस बारे में मुतनब्बे किया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि फ़ौजी कार्रवाइयों पर खर्च किए गए अरबों रुपए ज़ाय हो गए हैं, क्योंकि दारुल हुकूमत में पुलिस अफसरान को एक बार फिर कत्ल किया जा रहा है और सवात और किपी के नए जम होने वाले इज़ला में लड़कियों के स्कूल एक बार फिर खतरे में हैं। इस तनाज़ुर में अफ़गानिस्तान में तालिबान के असर और रसूख को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिन्होंने ख़वातीन के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटियां बंद कर दी हैं और उन्हें रोज़गार से रोक दिया है। इफ़रात ज़र में मुसलसल इजाफा हो रहा है और मुआशरे के एक बड़े तबके के लिए ज़िंदगी गुजारने की लागत नाकाबिल बर्दाश्त होती जा रही है, ख़ास तौर पर तेल, बिजली और गैस की बढ़ती हुई कीमतों के साथ। ये वकार के साथ जिंदा रहने के हक और जिंदगी की ज़रूरियात की फराहमी के लिए एक धचका है। ज़राए इब्लाग पर जुल्म और सितम में कोई कमी नहीं आई, लेकिन 2022 में पीटीआई के हामी मीडिया इदारों और सहाफ़ियों को धचका लगा, जबकि पीटीआई के तहत अपनी मुलाजमतों से हाथ धोने वालों ने टीवी पर दोबारा उभरना शुरू कर दिया। कीनिया में एंकर अरशद शरीफ का कत्ल, जो धमकियों और उनके खिलाफ दायर मुतअद्दिद मुकदमात के तनाजुर में मुख छोड़कर चले गए थे, खास तौर पर घिनौना था। दरियासना हिज़्ब इख्तिलाफ की शख्सियात की ऑडियो लीक मंजर आम पर आने लगे, जिससे प्राइवेसी की इस संगीन खिलाफ वर्जी में मुतासरीन से ज्यादा लीक करने वालों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। 2022 के वाक़यात की रोशनी में यह ज़रूरी है कि पाकिस्तान की आला क़यादत 2023 में बेहतरी के लिए खुद को वक्फ करे, जो अक्टूबर में मुतवक्के इंतखाबात की वजह से सियासत का एक और इंतहाई मसरूफ साल होने का इम्कान है। 2018 के इंतखाबात के दौरान 13 साल इससे ज्यादा उम्र के बच्चे अब वोट डालने के अहल होंगे। मुल्क की 30 साल से कम उम्र की निस्फ से ज्यादा आबादी यह फैसला करेगी कि अगले 5 सालों तक पाकिस्तान पर कौन हुक्मरानी करेगा। ये बात इंतहाई अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान के आइन पर उसकी हकीकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए, बजाय इसके कि ताकतवर ओहे के मुफादात के मुताबिक छेड़छाड़ की जाए। ये भी ज़रूरी है कि सियासत में फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुदाखलत बंद हो और आइन में बयान करदा फ़ौजी अफसरान के हल्फ की खिलाफ वर्जी ना हो। हकीकत यह है कि जनरल बाजवा 6 साल तक इक़्तिदार में रहने के बाद 2022 में रिटायर हुए थे, एक मुतनाज़ा तौसी की वजह से मामूल के 3 साल की बजाय। सियासी जमातों को एस्टेब्लिशमेंट के साथ मशगूलियत की सुर्ख लकीरें खींचने की ज़रूरत की निशानदेही करती है। ज़राए इब्लाग की आज़ादी का एहतराम किया जाना चाहिए और सोशल मीडिया रेगुलेशन, जिसका फ़ी अलहाल जायज़ा लिया जा रहा है, रियासत के कंट्रोल से मुतालिक पागलपन की अक्कासी करने के बजाय हुकूक के दोस्ताना होना चाहिए। जबरी गुमशुदगियों को इस्तेहकाम की किसी भी झलक के लिए रोकना चाहिए और तशद्दुद को मुअस्सिर तरीके से गैर कानूनी करार दिया जाना चाहिए, जिसके नतीजे में हुक्काम तो मुलव्वस हैं। पाकिस्तानियों ने तारीख में साबित किया है कि वो अपनी बुनियादी आज़ादियों की खिलाफ वर्जी की किसी भी कोशिश का कामयाबी से मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। मज़मून निगार डिजिटल हुकूक के लिए काम करने वाले एक फोरम बोलो भी के डायरेक्टर हैं। डान अखबार में शाये शुदा 29 दिसंबर 2022। For more videos, subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.